Hello everyone, hope you all are fine. Today we'll try to understand what is chicken snake. वो क्या है, how, what is its history, and why is it important for India and China. ये जो narrow passage है, as you can see, this narrow passage which is sandwiched between Bangladesh in the south and Nepal, Sikkim and Bhutan in the north is called chicken snake. ये जो narrow passage है, if you this narrow passage is located in West Bengal. This is also called Siliguri corridor because Siliguri is located in this part of chicken snake. Now you will be surprised to know that this इसकी जो width है, ये narrow passage की जो width है is only 27 kilometer. This is only 27 kilometer wide, this passage. The width this chicken snake act as a bridge. As you can see, ये एक ब्रिज का काम करती है विच कनेक्ट्स होल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ इंडिया. दिस आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बना कैसे, हाउ डिड इट गेट फॉर्म्ड. सो वी ऑल नो कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और इंडिया बने. एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि पाकिस्तान के दो पार्ट बने, एक वेस्ट पाकिस्तान एंड इन ईस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ. सो ईस्ट पाकिस्तान जो बना बांग्लादेश, इट गॉट फॉर्म एंड इंडिया वॉज लेफ्ट विद दिस नैरो पैसेज. इंडिया दिस इज द ओनली पैसेज इन इंडिया थ्रू विच कनेक्ट्स whole isolated northeast part of our country with the rest of India. That's why it's very important for our country. Now we'll try to know why is it important for both China and India. Why do you think? You tell me what is it? Why is it important for China and why is it important for India? You must understand one thing. We all know one thing. हम लोग सब जानते हैं एक चीज को कि weakness of your enemy becomes your strength, and China knows that very well. China understand that this chicken snake, this part of India is vulnerable and this part is India's weakness, because China understands कि in case of war, अगर war like situation में if China can reach there, अगर China ने इस part को capture कर लिया, then China can easily disconnect whole northeast part of our country with the rest of India. China अचानक से 5 करोड़ की आबादी वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रेस्ट ऑफ इंडिया से डिस्कनेक्ट कर सकता है. थर्ड, इट कैन टेक एडवांटेज वेरी इजीली. इट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस पॉइंट एंड इंडिया ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स वीकनेस. सो इंडिया ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि चाइना को इस पार्ट से जितना दूर रखा जाए वो उसके लिए अच्छा है. एंड चाइना वॉन्ट्स टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस पॉइंट. एज यू कैन सी दिस डैगर शेप, ये जो डैगर शेप का चीज़ आप देख रहे हैं, दिस इज चुम्बी वैली. दिस अ वैली लो लैंड एंड दिस इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना. दिस चाइना क्लेम टेरिटरी. दिस जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, वो क्यों चल रही है. सो इफ़ यू पे क्लोजर लुक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस रीजन और ढोकलम, दिस रीजन एक्चुअली दिस इज ए ट्राई जंक्शन. एज यू कैन सी ये ट्राई जंक्शन है. इस पार्ट में सिक्किम, इधर भूटान और उधर चाइना. सो दिस इज ट्राई जंक्शन and it's very strategically this is very important point. तो अभी this Doklam is a plateau. China claims that Doklam comes under its territory, but Bhutan claims कि Doklam उनके अंदर आता है, as in it's their part, and India supports Bhutan claim. So recently what happened कि China started constructing road all the way the road to Doklam, creating hurdle in creating that road to Doklam, and that China has problem with it. China is telling कि यार why are you coming in between? It's a controversial issue between China and Bhutan. Why are you putting your nose into this? But India understands. But if you look from the perspective of India, then you will understand that India does not want China to be as so close to chicken snake. That's why India does not want China to construct all-weather road to Doklam, and India is supporting Bhutan's claim over Doklam Plateau. Because if China can construct or go to Doklam and reaches here, then it would be very much, in case of war, it would be very much easy for China to reach this part of our country, to reach chicken snake. It's the region for recent between China and India. Hope you have understood this topic. If you have any question, you can videos के साथ आऊँगा to clarify your doubts.
If you have any questions, you can put your questions in the comment section, and if you share करें इस वीडियो को and subscribe to this channel. Thank you.